These dreams can't compare to what I'll see. Rivers flowing underneath, but with prayer it's reachable. Gardens so beautiful, and homes that shine in silver and gold. I'll never pass my greatest chance to be free from this world. Angels at the gates, Welcome us with praise, enter our gifts salam, and live on this greatest land. Allah's gift to us, filled with precious love. gardens of paradise. I trade it for this world. Just think, a gentle breeze, a fragrant wind, in a place you cannot see, where you'll feel peace for eternity. And I pray that both my parents have a place under God's eternal shade, where serenity is the only thing you'll feel. فيا جمال حياتها مع الحبيب المصطفى، وريحها أنهارها وطاب نعيمها. Angels at the gates, Welcome us with praise, enter our gifts salam, and live on this greatest land. Allah's gift to us, filled with precious love. gardens of paradise. I trade it for this world. Extraordinary, Allah has blessed me. Live forever, not temporary. Pray that my beliefs lead me there. Ya Allah, grant me a home up in Jannatul Firdaus. I pray that you accept my parents by my side. Angels at the gates, welcome us with praise. Enter our gifts salam, and live on this greatest land. I'd like to call P43 from grade 2nd, the magic box of the magic words. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. The traffic light. Red light, what do we say? What do we say? I say stop. I say stop right away. Good morning, children. Today we will learn mathematics. Good morning, sir. But why is math so difficult? Sir, math is very difficult. I cannot understand anything. अरे मैं एक बार साहब उठिए क्या हो गया है? हाँ मैं उठ रहा हूँ, अभी जिंदा हूँ। आजकल के नौजवानों को देखकर आपका एहसास क्या है? बिस्तर से उठकर मस्जिद न जाने के बाद, बिस्तर से उठकर मस्जिद न जाने के बाद ख्वाहिश रखते हैं कि कब्र से उठकर जन्नत जाने की। अस्सलाम
alaikum. I am number 2. I jump like a go. सुबह को उठ जाना अच्छा होता है, खाने को ठीक वक्त पर खाना, ठीक वक्त पर करो पढ़ाई, ठीक वक्त पर खेलो, अच्छी बातें जहाँ कहीं भी मिलती है ले लो। Actually we are talking उर्दू में बात कीजिए, उर्दू की क्लास चल रही है। दरअसल वहाँ मधु कर रहे थे। नहीं मैम, हम गुफ्तगू कर रहे थे। अरे वो गुफ्तगू है। जी मैम, हम गुफ्तगू कर रहे थे। But I only want to say, school is boring mom. Study well, you become a doctor, teacher or pilot. Really, yes, education makes your future bright. हमद अल्लाह ने पैदा किया, उसने हमें सब कुछ दिया, ओ एक है कलिमा तैयबा। इस्लाम में दाखिल होने की पहली शर्त गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मिनट अभी देखो, ಒಂದು ಟೋಪಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ. ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಆಯಿತು, 80 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಲಾಸ್ಟ್ 90 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬೇಡ, ನಾನು ಸ್ವತಃ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಾನು ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಜನರಿಗಾಗಿ. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not alone. We are not alone. We are not alone today. Oh, deep in my heart. मैं हूँ व्हाट्सएप। मैं लोगों के पैगाम तस्वीर उन तक पहुँचाता हूँ। लोग अपने दोस्तों से चैटिंग करते हैं. तेरे ಅರಸನಮನೆ ಅನ್ನುವುದರ ಬದಲು ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಅಲ್ವಾ? ಉದಾಹರಣೆ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಕೆಂಪಾದ ತಾವರೆ, ಕೆಂದಾವರೆ. Seeking knowledge, wisdom seek in our heart. Let kindness be under the shade of learning tree. We grow strong, wise and free. Teachers guide us, spirits bright. Our empty school is a guiding light. May respect and friendship bloom in our hearts by spreading gloom. With gratitude and faith we pray in empty school blessed day. Together we learn, together we grow. In our school our spirits flow. With faith and hope our minds raise. In empty school let's God's praise. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, AC ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ವಾವ್, ಅದೇ ಬೇಕು ಸರ್. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ದೃಶ್ಯ 2, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇವೆ. ಏನು ಬೇಕು ಸರ್? ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀ ಕೇವಲ 3 ಲಕ್ಷ. ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೀ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫೀ, AC ಫೀ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೀ, ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಫೀ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರ್, ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇವೆ. ಏನು ಅದು? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಸರ್? ಒಮ್ಮೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಕಿಡ್ನಿನಾ? ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ. ಮತ್ತೊಂದು
ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಸರೇನು? ಸುರೇಶ್. ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಹೆಸರು. ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸುರೇಶ್ ಅಬ್ರಾಯ್ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಿಗೂ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಕೇವಲ 50,000. 4. ಮಗನ ಮಾತು. ಮಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. See, I believe that education is not all about academics, but building characters, developing younger minds, and creating a memory for lifetime. For my dear students, I say, believe in yourself, never give up, and concentrate on your goals. Your journey has just begun, and we are here to support in every path of the way. And I would thank you each and everyone. Let us And your day. First and foremost, I thank Allah subhanahu wa ta'ala for blessing us with knowledge, opportunities and the ability to gather here today in unity and joy. Annual Day is not just a celebration of achievements but a reflection of our journey throughout the year. As teachers in MG Public School, our responsibility goes beyond academics. We aim to nurture not only intelligent minds but also strong character, good manners and firm. But why? My teacher asked me to try, but mom asked me to try. I practiced my heart and soul, but never achieve a goal. I want to become a superhero, but Ma give me a zero. Ma, this is no make a cup of tea. Okay, dear, this time I will get you free now. In 5 seasons, enough. Oh my God, what? There's no much in our life. Not that we are happy and we are silly man. Forget it now. What I'm guessing now. Oh God, please do something for my son. I will keep for my dear from now on and Rasan express my and Mother Sigyated by the fairy. Let's see what's going to happen. Hey clock, why are you sleeping? Tell me the time. No, I can't. You say no make in the dark. But I am all out calculation. God, I don't need you. Ding dong. Assalamualaikum madam. Waalaikumsalam bhaiya. What you need ma'am? Some tomatoes. What? Some tomatoes, some potatoes. Tell me quantity ma'am. I don't know. ಹಾಕಿನ್ ಬಾಬು ಹಾಕೈತೆ ನೋಡಿ ತಗದ. Okay, how can give me vegetables, ma'am? Okay, can go now. Mama, yes, dear. I'm feeling so weak. Can I get something to eat? Eat here, I will come. छोटी छोटी भूख मिटाओ, खा के पियो, टपी के खाओ मैगी. Oh, yummy, yummy, curly, curly Maggie. Oh, yeah. It's your father, it's just proportion. You are not using proportion. Which is next again, not testing good. Oh God, what is happening in this house? Dad. Yes, dear. I am feeling something. Come, love, go have pizza. Wait, dear, let me check my wallet. Look at the fruits. They are full of vitamins and minerals that make you strong and active. Look at the fruits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Atmani Nanda, grade nursery. I am banana. I am good for Vasan. Eat me when you feel tired. I am Bismillah. I am Apple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Aksab Gali from Rain Nursery. I am Mango, the king of
कैसे खा रहे हो? खाना खाते वक्त मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए। जी आयशा बाजी, मैं आपसे ख्याल रखूंगी। ये क्या महमूद, खाना भी खा रहे हो और ऊपर से फोन भी चला रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है। खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी आयशा दीदी, मैं आपसे नहीं देखूंगा। अबू जैन भाई, खाना खाने का सही तरीका ये है, जब हमारे प्लेट में एक ही तरह का खाना हो तो हम अपनी तरफ से खाएं और सबकी तरफ से ना खाएं और जो प्लेट से भी कुछ ना उठाएं। जी आयशा बाजी, मुझे आज खाने का सही तरीका मालूम है। क्यों ना आज हम खाना भी खाते जाए और खाने का सुन्नत तरीका भी सीखते जाए। जी हाँ अबू जैन भाई, जब जमीन पर खाना खाते वक्त उल्टा पैर बिछाकर सीधा घुटना खड़ा करके या फिर दो जाना बैठकर खाना खाना सुन्नत है। और खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह भूल जाए तो याद आने पर दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाही अव्वलहु व आखिरहु। आयशा बाजी, खाना अपनी तरफ से खाना चाहिए ना? जी हाँ बुजुर्ग भाई। आयशा बाजी, खाना खाते वक्त मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए ना, और खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह भूल जाए तो याद आने पर दुआ पढ़नी चाहिए ना, बिस्मिल्लाही अव्वलहु व आखिरहु। जी हाँ समायरा, आयशा दीदी, और खाने में कोई भी खराबी नहीं निकालनी चाहिए ना? जी हाँ माहिन। May I am very helpful for you. Cut, 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 cut. Stop, stop. Stop, stop. Don't cut the tree. Today I won't cut the tree. Thank you for letting me know. The is a soft tree. I've been answered many trees. Thank you. Good evening, everyone. Respected principal sir, teachers, parents, and my dear friends. Today we are present a skit about our environment and who we can save our Mother Earth. Mother Earth enters slowly, looking tired and sad. Because of pollution, many people are getting breathing problem and disease. My dear children, please save me. I am your only hope. Scene 6 solution. We will plant more trees. We will say no to plastic. We will save water and electricity. We keep our surrounding clean. Plastic monster become weak. Oh no, if you stop using plastic, I will disappear. Plastic monster exits slowly. Final scene, happy ending. Thank you children. I will be clean again. I feel fresh. Mother Earth smile. When you care for nature, you care for your future. Tullahi barakatuhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadith number 1, man sammata naja. Jo khamosha ne najat pai. Hadith number 2, ad-deenu an-nasihatu. Deen sabke saath khe khai ka naam hai. Hadith number 3, at-tuhuru shatrul iman. Paki आधा ईमान है. हदीस नंबर 4, अस्सलामु कब्लल कलामी. बात करने से पहले सलाम किया करो. हदीस नंबर 5, नौमु सुबहती यमनउर रिस्का. सुबह के वक्त का सोना रिस्क को रोकता है. हदीस नंबर 6, अल हयाउ मिनल ईमानी. हया ईमान का जुज़्व है. हदीस नंबर 7, अल वुज़ू मिफ्ताहुस सलाती. वज़ू नमाज की कुंजी है. हदीस नंबर 8, अद्दीनु युस्रुन. दीन आसान है. हदीस नंबर 9, अस्सलातु इमादुद्दीन. नमाज दीन का सुतून है. हदीस नंबर 10, अद्दुआउ मुखुल इबादती. दुआ इबादत का मौज़ा है. हदीस नंबर 11, इन्ना खियारकुम अहासिनुकुम
अखलाका, तुम में बेहतर वो है जिनके हालात अच्छे हो। हदीस नंबर 12, मल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। हदीस नंबर 13, ला यशकुरुल्लाह मल्ला यशकुरुन्नास, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। हदीस नंबर 14, कुल्लु मारुफिन सदक़तुन, हर भलाई सदका है। हदीस नंबर 15, रकाअतल फज्री खैरुम मिनद दुनिया मा फीहा, फजर के 2 रकात सुन्नत दुनिया और मा फीहा से बेहतर है। तकी ಬೇಗ ಓದಿ ನೋಡು ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸಿದ್ರಾಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅವಳು ನಾಳೆ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ನಾನು ಈಗಲೇ ಬಂದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಈಗಲೇ ಬಂದೆಯಾ ಬಾಬಾ? ಹೌದು, ಆದರೆ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ ನೋಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ ಕೆಲಸ ಎನ್ನಮಕ್ಕೆ. ಹೌದು ಸರ್, ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುದ್ದಿ ತಲುಪಿಸುತ್ತೀರಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಸರ್. ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುದ್ದಿ ತಲುಪಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. Children a good life, but sometimes they forget to give most important thing their time. Let us see what happens in the life of these children. Scene 2, funny plus reality scene. Scene 2, funny plus reality scene. Children sitting together sadly. My mother loves her phone more than me. If I say mommy, she says that better I am on WhatsApp. My father is always in a meeting, morning meeting, afternoon meeting, evening meeting. I think even in dreams he is saying hello. Can you hear me? Yesterday I asked my father, Papa, let's play cricket. He said better send me a request on calendar. My mother says don't you mobile to me, but she is always on Instagram, Snapchat. Scene 3. Sometimes I feel very lonely at home. Scene 3, emotional part. We have toys to game, but we don't have our parents' time. Scene 4, dream America. मैं रिपोर्टर जोया अस्पताली, कैमरा वुमन समहा के साथ आज की मज़ाया खबरें। खबर नंबर 1, स्कूल के एक तालिबे इल्म ने कहा है कि मैं रोज होमवर्क करता हूँ, लेकिन कॉपी में नहीं, दिमाग में। टीचर ने दिमाग चेक करने का फैसला कर लिया है। खबर नंबर 2, स्कूल इंतजामिया से खबर आई है, जो तालिबे इल्म रोज कहता था कल से पक्का पढ़ूंगा, वो आज कल तक नहीं आया। खबर नंबर 3, एक उस्ताद ने कहा ये सबक बहुत आसान है। बच्चों दिल ही दिल में जवाब दिया, सर तभी तो मुश्किल लग रहा है। बेटा है मैं आपके सामने पहला कलमा सुनाने आई हूँ। पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा, अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम अनम है, मैं पहली जमात में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने दूसरा कलीमा सुनाने आई। ताकत ने काम करने की कुव्वत अल्लाह ही के तरफ से है, जो आलीशान अजमत वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अजीना है, मैं पहली जमात में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने सातवां ईमान मुजमल सुनाने आई हूँ। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि
शरीक नहीं, इसके लिए बादशाह है, इसके लिए तमाम तारीफ है। वही जिंदा करता है, वही मौत देता है, बेहतरीन इसके हाथ में और वो हर चीज पर कादिर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सबा है, मैं दुआम जमात में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने 8वां कलमा सुनाने आई हूँ। 8वां कलमा ईमान मुफस्सल। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल कद्र खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। तर्जमा, मैं ईमान लाती हूँ अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसके किताबों पर और रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और अच्छी बुरी तकदीर पर जो अल्लाह की तरफ से है और मरने के बाद दोबारा उठा ले जाए पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Hello friends, I am a circle. I am round like the sun and ball. Hello friends, I am triangle. I have 3 sides like a pita slice. Hello friends, I am a rectangle. You see me door. I am Atika Pakali from grade nursery. Ka, that thirsty crow. One sunny day, a crow was very thirsty. He looked for water here and there, but could not find the water. At last, he found a pot with very little water in it. The crow could not reach it. He thought of it that drop in the pot one by one. Plop, plop, plop. Water came up slowly. Crow ran the water and he was happy. The crow sang the rest. I am special, thank you. School goes open. I am large and 8 months. ಉಲ್ಟಾ ಡೋಜಿ ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ರಿ In August, we celebrate Independence Day. As a lawyer, my responsibility is to fight for justice. I advocate for people who cannot. My topic is about scientists. I am a scientist. I am our community helper. Scientist is a person tasty food. So friends, do not eat junk food. Always eat healthy food and be strong. Thank you. Assalamualaikum. I am soldier. I am ray and stone. I love my country very much. I protect from enemies. And how are you all? I am fine, thank you, ma'am. Let's start finding alphabets, okay? Okay, ma'am. Anam Bijapur, pick the letter. Very good. Zayan, pick the letter. Very good. Adira, pick the letter. A for apple. Very good. Hanzala, pick the letter. D for gun. Very good. Mubashir, pick the letter. Y for yoga. Very good. Alif se anar, bade मजेदार. D से बंदर, चलो भागो अंदर.
समर, हाय मेरी कमर। जीन से जुराब हो गई खराब, जैसे चिड़िया आफत की उड़िया। ऐसे हुक्का गुड़ 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 करता, ऐसे खरगोश है बड़े खामोश। डाल से दरख्त लंबे और सख्त, डाल से डोल बर्तन है ये गोल। साल से ज़ख़ीरा लग जाए न कीड़ा। बड़े से रोटी साथ खाए बोटी, बड़े से पहाड़ पर आ गई बहार। से ज़राफ़ा खा गया लिफ़ाफ़ा, से सारा बाली ओढ़ो वाली बारिश सारी। सीन से सेब रोज़ खाओ एक, शीन से शोर न करो और। स्वाद से सुराही लंबी गर्दन वाली, स्वाद से ज़ईफ़ बैठे मेरे करीब। कुएं से तोता बड़ा अच्छा बोलता, सुई से ज़रूफ 40 के हरूफ। आइन से उकाब पालते हैं नवाब, आइन से गुब्बारा फट गया बेचारा। से फवारा उड़ता पानी सारा, काफ से कुरान अल्लाह का फरमान। काफ से किताब करे कामयाब, गाफ से गाय घास खाती जाए। लाम से लीमू खट्टा हो गया मुँह, नीम से मोर ले गए तो चोर। नून से नाक रखो इसको साफ, वाव से वर इस पे करो मश्क। हे से हाथी वज़न उसका काफी, हम हेलो मम्मी बोलो। डैडी मेरे कैसे हैं, आपा बाजी भैया मुन्ना घर में सारे कैसे हैं। बोलो मम्मी बोलो मम्मी। धरती अंबर चांद सितारे दुनिया कैसी लगती है। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। I seek refuge in Allah from curses Satan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चढ़ते दिन की रोशनी की कसम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. वद्दुहा, कसम है चढ़ते दिन की रोशनी की। By the morning brightness. वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम है रात के जब उसका अंधेरा छा जाए।
and by the night when it's covered with darkness. ما ودعك ربك وما قلى کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے. Your Lord has not forsaken you, O Muhammad, nor has disapproved. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور یقیناً آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے. And the hereafter is better for you than the first life. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. And your Lord is going to give you, and you will be satisfied. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا پھر تمہیں ٹھکانہ دیا. Did he not find you an orphan and give you refuge? وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا. And he found you poor, and he found you lost and guided you. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا. And he found you poor and made you self-sufficient. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ اب تم یتیم پر سختی مت کرنا. So as for the orphan, do not oppress him. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور جو سوال کرنے والا ہو اسے جھڑکنا نہیں. So as for the petitioner, do not repel him. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور تمہارے رب کا جو احسان اور نعمت ہے اس کو بیان کرتے رہنا. And as the favor of your Lord reported. صدق اللہ العظیم عظمت والے اللہ کا فرمان سچ ہے. God Almighty has spoken the truth.
I read the book Chidi House Daily. Hello, I am 4. I go to play 4 p.m. daily. Wonderful occasion of felicitation ceremony 2025-26, where we celebrate talent, mehnat and success. Success is the result of hard work, dedication and belief in oneself. So, now let us begin the most awaited segment. I request Bashir Ahmed Girgawi sir, Chief Patron MG Public School, please come on the stage, and I request welcome. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help. My heart is breaking, so tired of crying. Lord, I'm calling. I need your help. Assalamu alaikum to everyone. It's a very good evening here, alhamdulillah. So first of all, I would like to congratulate the management of this MG school and the principal of the school, all the staff members and all the people who are present here. Especially I would like to congratulate the parents who have chosen such a beautiful school. Okay, alhamdulillah, when I was watching the performance of the students, it was a mind-blowing performance. Alhamdulillah, the students looked very confident. Okay, and such a small kids with performing with such a confidence, it's alhamdulillah, it shows that the teachers, the staff members, other staff members have put a lot of efforts. So I especially congratulate all the parents for sending their kids to such a school, because see, nowadays education is very important and it's very important to choose a right school. Okay, and to spend on your kids, it's an investment. It's like an investment. You are investing on your kids. So alhamdulillah, so you have chosen the right school, and I would encourage all the parents to support this school. Okay, support both morally, support financially, everything. So alhamdulillah, I congratulate once again, and to all our dignitaries, our chief guests of today, and all the members who have been invited. Alhamdulillah, jazakallah khair. Once again, thank you and all. About the solar system. Good morning, students. Today we will learn about the sun, earth, moon. Tell me who created them? Allah created them. Very good. Allah has created the universe in a perfect system. Hello everyone, I am the sun. I give light and heat to earth. Oh, so you are the reason it is so hot in summer. Take a small holiday. Ha ha ha, if I take holiday, you will freeze like ice cream. I am a star and sun is my name. Center of the solar system is what I claim. Bright and golden, shining high. You can see me up in the sky. A ball of fire is how I am seen. All planets orbit me, making me supreme. Ali, be thankful. Without the sun, there will be no life. Hello everyone, I am Earth. I move around the sun. Wait, you are moving all the time? Are you getting dizzy? Ha ha ha. No, Allah made my movement perfect. I am on earth, I never stop spinning. A beautiful planet, a little bit leaning. The only planet with water and life. 70% is ocean. Sometimes I am cold, sometimes I am hot. Thank you. Because earth moves, we get day and night. And I am the moon. I move
so you are the one with sun and E. Yes, everyone looks for me in the sky. I am the moon, I go around Earth. Reflect by the sunlight, I show different earth. Nearest neighbor of Earth in space. Sometimes I am full, sometimes I am gone. The Earth and moon is the best duo. We spin and dance all day long. Yeah. Allah says in the Quran that the sun and moon move in a perfect order. Subhanallah, Allah is the best creator. So children, when we study science, we understand the beauty of Allah's creation. Wow, what a beautiful monument. Let me write my name on it. Hey, why are you writing name on it? Because I want to make my name famous and every visitor who visits, they can know my name. Hold on, you cannot write on monuments. They are historical values. Let's preserve them for future generations instead. Writing on monuments damages them and erases their historical values. You should know your duties. Yes, now I know my fundamental duties. Future bright, future bright. Know our duties, know our right. Future bright. Justice, social, economic and political liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of states and of opportunity and promote among them all and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Thank you. Amazing performance. Hello Tayyaba. Hello Afia. It was superb, right? Yes, it was amazing. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Afia from grade 5th. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Tayyaba from grade 5th. Ladies and gentlemen, I am here to bring a light our vision of MG Public School. And I am bringing the light toward the mission of MG Public School. Our vision to empower students by providing authentic and ethical knowledge, fostering holistic life, training for purposeful future. Our core values are equality, respect, understanding, hard work. Thank you. It's my turn. Our mission, elite infrastructure, developing world-class facilities, leadership excellence, receiving and nurturing visionary educators, continuous evolution, adopting a growth mindset by learning daily outcomes and refining our pedagogical strategies, comprehensive care, providing 24/7 boarding environment, dedicated, immersive life skills and training character building. Thank you. Dancers. There are 3 dancers, past, present and future. Dancers are the backbone of English grammar. Characters. Scientists as Rifat, Aisha as Afsana, Fatima as Nikhat, Time Machine as Kulsumbi, Dragon as Rehan Makandar, Future Robot as Abbas. Scene 1. Present time. Today Aisha and Fatima visit a scientist. She has a special time machine. नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिरल वदाअ आपका हुस्न साफ चमकदार और झलकता था। अब लजल वज आपकी चेहरे की बनावट बहुत खूबसूरत थी। हसन अल खल्क जिस्म की बनावट बहुत हसीन थी। लम ताइबुहु तजला आपका पेट सीने के बराबर था। न मोटापे का ऐब, न कमजोरी का नक्स और न पेट बाहर निकला हुआ। वलम तुजरिबी ही साला आपका सर मुबारक छोटा नहीं था, कदरे बड़ा था। वसीमुन कसीम आपका हुस्न ऐसा था कि जिसको देखने से तबीयत ना भरे, देखने वाला देखता ही रह जाए। बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। फी आइनैहि दाज आपकी आंखें बड़ी थी और आंखों की सियाही बिल्कुल काली थी और सफ़ेदी बहुत ज़्यादा थी। वफ़ी अशफारिही वतफ पलकों के बाल लंबे थे और तलवार की तरह खमदार थे। वफ़ी सौतिही सहल आपकी आवाज़ बुलंद और गूंजदार थी। अहवर व अकहल आपकी आंखें सुरमदार थी, यानी आपकी आंखों में कुदरती सुरमा लगा रहता था। अज़ज्जु व अक़रन अब्रू मुबारक बारीक बारीक और मिले हुए थे। वफ़ी उनुक़िही सता आपकी गर्दन लंबी और चमकदार थी। वफ़ी लिह्यतिही कहता दाढ़ी मुबारक के बाल गहरे थे। इंसमत फ़अलैहिल वक़ार
جب آپ خاموش ہوتے تو پروقار لگتے تھے. وَإِن تَكَلَّمَ سَمَاهُ عَلَاهُ الْبَهَاءُ اور جب بات کرتے تو چہرے پر نور کی برسات شروع ہو جاتی اور چہرہ مبارک پر رونق ہو جاتا. حلو المنطق فضلا لا نظر ولا حذر آپ کی باتوں میں مٹھاس تھی, آپ کی گفتگو بالکل واضح ہوتی تھی اور کوئی بات بے فائدے کی نہیں تھی. کأن منطقہ کرزات نظم یتحدرن جب آپ بولتے تو لگتا تھا کہ موتیوں کی لڑی سے موتی ٹپک رہے ہیں. اجمل الناس وابہاء من بعید دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ رعبدار اور خوبصورت لگتے تھے. واحسنہم اجملہم من قریب اور قریب آنے پر سب سے زیادہ شیریں, حسین اور پیارے نظر آتے تھے. رباعۃ لا تشناہ من طول آپ کا قد درمیانہ تھا, نہ اتنا بڑا کہ آنکھوں کو برا لگے. ولا تقتحم عین من قصر اور نہ اتنا پست کہ آنکھوں کو حقیر لگنے لگے. فَهُوَ أَنْدَرُ ثَلَاثَةِ مَنْدَرٍ وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا لہذا آپ سر سبز و شاداب اور قدر و منزلت میں سب سے زیادہ بڑے ہوئے تھے. لَهُ رُفَقَارٌ يَحُفُّونَ بِهِ آپ کے ایسے ساتھی جو آپ کے ارد گرد گھیرا ڈالے رہتے تھے. ان قال سمیعوا له جب آپ اپنے ساتھیوں سے کچھ کہتے تو فوراً اس کی تعمیل کرتے. وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ اور جب کوئی حکم دیتے تو فوراً اس کو بجا لینے اور پورا کرنے کی طرف دوڑ پڑتے. محفوظ محشود لا عابس ولا مفند آپ سب کے مخدوم تھے, آپ سب کے محترم تھے, آپ کا رویہ سب سے نرالا تھا اور آپ کی فرمان کی مخالف نہیں کی جاتی تھی. جزاک اللہ خیر. Mr. Adhar Naveed Sheikh sir, founder and secretary Iqra Public School, Bolhar. My heart is breaking, so tired of crying. Lord, I'm calling, I need your help. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Respected chief guest, all the dignitaries, dear parents and my dear students. Alhamdulillah, Mr. Mursal invited us and I accepted the invitation, and Alhamdulillah I am feeling very much pleasure to be here in this program. I see here the students performing on the stage, brilliantly performing, excellent, the level of confidence, the way they are, there is no fear on their face. Alhamdulillah, we need to congratulate all the staff, all the students, all the staff and the management here for this amazing work what they had done. Mr. Mursal had given me one topic to say a few words on this occasion. اردو میں بولوں میں؟ اردو میں بولنے سے شاید تمام کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. انگلش میری اتنی اچھی بھی نہیں ہے, بچوں سے تو بہتر نہیں ہے. ماشاءاللہ بچے بہت زبردست, بہت ہی اعلیٰ طریقے سے بات کر رہے ہیں. جناب مرسل صاحب نے مجھے ایک ٹاپک دیا ہے بات کرنے کے لیے, میں بس 2 منٹ لوں گا. آپ تمام یہاں بیٹھے ہوئے مجھے سننے نہیں آئے ہیں, آپ تمام اپنے بچوں کے پرفارمنس دیکھنے کے لیے آئے ہیں. جناب مرسل صاحب نے مجھے کہا ہے ماں باپ کا تعلق ادارے سے کیا ہو, اس پہ کچھ بات کہیں. تو میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں, آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, اپنے بچوں کی تربیت کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بتائیں گے مجھے؟ آپ جو اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ مارکس حاصل کرنا, نوکری حاصل کرنا, رینک آنا, یہ نہیں ہے. بچوں کی تربیت کا میرے مینٹر کے حساب سے 3 اصل مقصد ہیں.
C's of a children's तरबियत के उनके। तो सबसे पहले 3 C में एक C क्या है? हमारी परवरिश बच्चों के लिए फर्स्ट C है कॉन्फिडेंस पैदा करना, उनमें खुद एतमादी पैदा करना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जनाब मुरसल साहब और जनाब बशीर गिरगांव साहब को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। आज उन्होंने ये जो कारनामा किया है बहुत ही मुख्तसर वक्त में, 3 साल, आज ये 3रा एनुअल डे है, इसमें ये जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक्सीलेंट है, बहुत एक्सीलेंट है। मैं सही में उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। तो हमारा मकसद, बच्चों की परवरिश का सबसे पहला मकसद क्या होना चाहिए? उनके कॉन्फिडेंस को बनाना चाहिए। दूसरा मकसद, दूसरा सी क्या है? उनमें क्रिएटिविटी पैदा होना चाहिए। बच्चे जो हैं कुछ भी कर रहे हैं, क्रिएटिविटी, क्राफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये क्रिएटिविटी पैदा होना चाहिए, ये दूसरा मकसद होना चाहिए। तीसरा मकसद जो है उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर, प्रॉपर कैरेक्टर होना चाहिए। और ये कैरेक्टर जो है उसके लिए बहुत बड़ा नमूना हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नमूना है। उनके आदत अखलाक वैसे उनमें होने चाहिए। ये 3 चीज़ हैं जो एक माँ बाप को अपने बच्चों में परवरिश के दौरान ये चीज़ें करनी चाहिए। उनके मार्क्स, उनके पढ़ाई, उनके मार्क्स, उनके ग्रेड्स, उनके रैंक, वो बात की बात है। सबसे पहला उनका कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर और क्रिएटिविटी, ये 3 चीज़ बहुत बुनियादी हैं। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, जो चीज़ें माँ बाप और इदारे में होनी चाहिए उस पर मुझे मुरसल साहब ने कहा है कुछ बात करूं। तो देखिए, इदारा जैसे ये MG पब्लिक स्कूल है, ये इदारा आपका पार्टनर है। आप किसी दुकान में जाते हैं, कुछ चीज़ खरीदते हैं, लेके आते हैं, वो बनी हुई रहती है, लेकिन जब एक स्कूल में आप दाखिला लेते हैं बच्चों का, तो वहाँ पे जाके एकदम से ऐसा ला नहीं सकते हम। एक दिन में बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। जब तक आप अपने इस इदारे को, MG स्कूल को अपना पार्टनर नहीं समझेंगे, अपने साथ उसको शामिल नहीं करेंगे, तो वो मकसद बच्चे की कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। आप उसको दुकान जैसा नहीं समझ सकते। इदारे को जाए, एडमिशन ले लिए, बस बच्चा इदारे का हो गया, बस मुरसल सर संभालो, गिरगांव सर देखो, आप दोनों की ही ताबे और हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होगा। आपको इदारे के लिए पार्टनरशिप करनी होगी, तभी वो बच्चों का मुस्तकबिल, उनका जो है मुस्तकबिल अच्छा बनेगा। तीसरी चीज़, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है? आप अपने बच्चों के सामने इदारे की कुछ भी चीज़ें हैं, इदारे के कुछ भी नेगेटिव चीज़ें हैं, बच्चों के सामने बयान ना करें। असातिज़ा की इज्जत करें। आपके टीचर ऐसे हैं कि आपके बच्चों के सामने नहीं बोलना। जो कुछ भी खामियां हैं, जो कुछ भी चीज़ें हैं, आप इदारे को जाइए, पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए। उससे इदारे को बेहतरी करने का मौका मिलेगा, सुधरने का मौका मिलेगा और वो बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर करेगा। तीसरी चीज़ जो है, इदारा जो चलता है फीस पे चलता है। आप अगर, ये हर इदारे का मामला है, मेरे इदारे में भी होता है, इदारा फीस पे चलता है। अगर आप इदारे को टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे, इदारा नहीं चल सकता। इदारा डिपेंडेंट होता है आपकी फीस पे। इदारा होता है डिपेंडेंट तमाम बच्चों के वालिदैन के पेमेंट पे। जब सही टाइम से आपकी पेमेंट होगी, सही टाइम से आपका इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा, सही वक्त पे इदारे के सैलरीज होंगे, सही वक्त पे इदारे के अखराजात पूरे होंगे, तो वो फोकस कर सकेंगे पढ़ाई पे। अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे, इदारा सक्सेस होना और हम एक्सपेक्ट करना कि हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं, ये मुमकिन नहीं। तो असल मकसद आपका और इदारे का जो है कि आप और इदारा पार्टनर्स हैं। जब तक आप इदारे को अपना साथी नहीं समझेंगे, बच्चों की कामयाबी होना बहुत मुश्किल है। देखिए, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, बातें तो बहुत मैं सोच के आया था, अब ये मौका नहीं है ये बातें समझाने का और बोलने का। बस मैं जनाब बशीर अहमद गिरगांव साहब और जनाब मुरसल कुरैशी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ
کہ انہوں نے یہ جو سما بنایا ہے اور یہ جو بچوں پہ محنت کی ہے وہ قابل تعریف ہے. میں ان کے لیے ایک سلیوٹ کرتا ہوں. سر آپ کے لیے سلیوٹ ہے سر, آپ نے بہت زبردست کام کیا ہے الحمدللہ. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ لیول آف کانفیڈنس ہوگا, یہ لیول آف انگلش بچے بات کریں گے. الحمدللہ بہت میں خوش ہوا. میں ایسی امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کولار کا نام ایم جی اسکول سے پہچانا جائے انشاءاللہ. میں جناب مرسل صاحب اور گرگاؤں صاحب کو میں بہت ہی مشکور ممنون ہوں, انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا, مجھے دو بات کرنے کا موقع دیا. آخر میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Miss Lakshmi Medadar, Academic Head, to please come on the stage and felicitate Miss Ashwini Hireman. We welcome you, madam. A very warm good evening to everyone present over here. Respected Chief Guest, Principal Sir, dignitaries, parents, and my dear students. I'm very honored to be present over here to the wonderful evening that is MG School's 3rd annual celebration. So, Mursal sir had invited me and I was finding it tough to come over here, but I felt really very happy to be part of today's wonderful evening. If I would have not come, I would have really missed a lot. And I'm very happy to see that like children's performing so confidently. It shows that like all the efforts what the teachers and the management is taking in terms of building them, it's giving so much color. And coming today's, like I've been given a very important topic to talk, that is importance of values and discipline in students' life. See, these days everyone is running behind marks and ranks. So competition is so very fast, but we are forgetting that like the very more important than this marks and the success is like your base. That is like your values and discipline. Values of what? Values we see, it is not very big thing. It's very small habits which you inculcate in yourself and which you believe in and you follow all your life. Values, you can say it as like being honest, giving respect to your elders, being kind, and there's so much like showing gratitude. You can say there are so many values. Giving values starts from your family, from your teachers, you get it from everywhere. Now what I ask to the students is you keep grasping all the values what have been taught to you and stick on to it. That is going to take you very long. Success without value is temporary. And the next one what was given is discipline. Discipline is not that like disciplinary action or punishment. Discipline is something, I call it as self-love. It is like which you do it on a routine basis, which will take you in a long term. Success without discipline is impossible. So if you have wanted to see a long term, you wanted to reach somewhere, it is discipline which will take you to the longer run. And here I want to end my talk, and I would like to really thank Mursal sir for giving me this opportunity. I was telling no for coming over because I'm very nervous when I come on stage. Thank you, sir. Thank you so much. So you make that look good? Exactly. She makes no look special. Yes, a smart student, a big house, a beautiful flower. Please note his position. I am a preposition. What do you do? I show place and direction. For example, I am standing on the stage. Stop arguing. I am conjunction. Hello conjunction. Hard work. What you trying today? Words and sentence. I connect ideas and but become so. Wow. Who are you? I am in conjunction. I show feeling. Oh no. Ouch. All right. Fairy as Shamme, Asiya as Aisha as Afia, Muhammad as Adil. Scene 1. Please the magic box. The
the magic man bring a magic box. This is my magic box, but it open with magic word. Open the box, open the box. Oh no, did it not open? But I am here to see you forgot the magic word. Yes, please open the box. Look, the box is open. Please make people happy. Scene 2. Sorry. Oh no, Muhammad, you dropped my book. Sorry, Aisha. It is okay, Muhammad. في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى هو هو كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا الله الله Oh Allah the Almighty Allah Allah protect me and guide me Allah Allah to your love and mercy Allah Allah Ya Allah don't deprive me Allah Allah from beholding your beauty Allah Allah Oh my Lord accept this plea Allah Allah Hasbi Rabbi Jallallah Allah Lord, I'm calling. I need your help. I don't wanna fight no more. I don't wanna fight this. खुदा तो वो है खुदा तो वो है खुदा तो वो है खुदा तो वो है वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जमां है जमाल सारे उसी का जलवा उसी के जलवों का कारवां है वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जमां है जमाल सारे उसी का जलवा उसी के जलवों का कारवां है जो दिन के पर्दों पे शब बिछा दे जो रात को फिर सहर बना दे गमे खिजा को बहार कर दे शजर को फिर बासमर बना दे वो शाख हसरत गुलाब कर दे मेरा पैर का सुना दूध पिए की दुआ अल्लाह पैर के नबी रसीना मेलो India, a land of diversity where people speak different language, different clothes and following different costumes. Both the different do not divide us, they special and strong. Language is not just words, it is a way to express love, respect and identity. Every language is beautiful and deserves respect. Let us put our hands together to welcome grade 5th student to perform on the stage. Thank you. My name is Madhavi. I'm from Alapi. I speak Malayalam, but I'm just like you. My name is Nattuvar. I'm from Srinagar. My name is Nattuvar. I'm from Srinagar. I speak Kashmiri, but I'm just like you. My name is Suprada. I'm from Kolkata. My name is Suprada. I'm from Kolkata. I speak Bengali, but I'm just
like you. My name is Vasundhara, I'm from Vadodara. My name is Vasundhara, I'm from Vadodara. I speak Gujarati, but I'm just like you. My name is Shamsher, I'm from Ajmer. My name is Shamsher, I'm from Ajmer. I speak Urdu, but I'm just like you. My name is Arundhati, I'm from Guwahati. My name is Arundhati, I'm from Guwahati. I speak Assamese, but I'm just like you. My name is Benjamin, I'm from Panjim. My name is Benjamin, I'm from Panjim. I speak Konkani, but I'm just like you. My name is Rani Mai, I'm from Chennai. My name is Rani Mai, I'm from Chennai. I speak Tamil, but I'm just like you. My name is Jaswinder, I'm from Chandigarh. My name is Jaswinder, I'm from Chandigarh. I speak Punjabi, but I'm just like you. My name is Madhuri, I'm from Ratnagiri. My name is Madhuri, I'm from Ratnagiri. I speak Marathi, but I'm just like you. My name is Jamshedji, I'm from Panchgani. My name is Jamshedji, I'm from Panchgani. I speak Parsi, but I'm just like you. My name is India, I'm from India. My name is India, I'm from India. I speak Hindi, and I'm just like you. And I'm just like you. I welcome you, ma'am. आज के एग्जाम खुसूसन बच्चों की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें शामिल हो गई है जिन्होंने इनकी तालीम अखलाक और वक्त दोनों बर्बाद कर दिया है। मैं सबसे पहले मोबाइल फोन को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। आलिजा, मुझ पर ये इल्जाम क्यों? मैंने तो लोगों को पूरी दुनिया से जोड़ देती हूँ। झूठ, तुम लोगों को दुनिया से जोड़ते हो, लेकिन अपने बराबर बेटे, माँ बाप और बहन भाई से दूर करते हो। तुम्हारी वजह से बच्चे रातों को जागते, नमाजें कज़ा करते और अखलाक से गिरी हुई चीजें देखते। बोलो, क्या ये सच नहीं? जनाब, ये कसूर मेरा नहीं, ये इस्तेमाल करने वालों का है, लेकिन सच है कि इनका वक्त छीन लिया है। इसे एक तरफ खड़ा किया जाए, अगला मुजरिम पेश किया जाए। अगला मुजरिम झूठ। आलिजा, ये वो बीमारी है जिसने माशरे की बुनियाद खोखली कर दी है। ये बच्चा स्कूल का काम ना करने पर टीचर से झूठ बोलता है और घर देर आने पर वालिदैन को धोखा देता है। इसने सच्चाई का रास्ता रोक रखा है। जनाब, मैं तो इसलिए आती हूँ ताकि इस तरह से बच जाए। मैं तो इनका दोस्त हूँ। खामोश, तुम दोस्त नहीं, तबाही का रास्ता हो। अगला मुजरिम कौन? अगला मुजरिम ग़ीबत। जनाब, मैं तो सिर्फ बातें करता हूँ, इसमें किसी का क्या बिगड़ता? तुम्हारी वजह से दोस्तों में लड़ाई होती है, दिल टूट जाते हैं और नफरतें पैदा होती है। क्या तुमने नहीं सुना कि पीठ पीछे बुराई करना अपने मुर्गा भाई के गोश्त खाने के बराबर है? अब हम अल्लाह ताला से वादा करते हैं कि अब हम हमेशा अल्लाह ताला की बताए हुए 5 वक्त की नमाजी बनेंगे, इंशाअल्लाह। अंदर आ जाऊं? आइए साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आपका कारोबार? क्या कहूँ, मेरा बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आप बेहतर जानते हो। ऐसा आप फिक्र मत करो,
मैं आपके बिजनेस के शेयर खरीद लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस। कोई बात नहीं। रवैये से परेशान होकर दूसरे शहर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद तीनों बेटे गांव वापस आ जाते हैं। हमने अपने वालिद की कुर्बानियों को नजरअंदाज किया है। अब हमारी यही सजा है। हम उनको जिंदगी भर याद करते रहेंगे और उनसे मिल नहीं पाएंगे। Academic report by our academic head, Mrs. Lakshmi Medida. And good evening everyone. Worthy Chief Guest Mr. Lakshman B. Nimbargi sir, SP Bijapur, and Mr. Arif Khan sir, former Bollywood actor. Respected management, honorable principal, esteemed staff, distinguished guests, dear parents and my lovely children. Our vision is to modernize education, cultivate confident citizens and foster academic excellence. Our mission focuses on providing a natural environment that integrates technology, expert teaching and extracurricular activity to prepare students for the next level of success. And I give the seed water so it can grow. Seeds need water to grow. Look, I was once a tiny seed and now I am a plant. I am a tree. I am a tree created by Allah, a Santa, reminding you to stay strong in our faith. Allah made me grow to give fruits, vegetables and fresh air. Wow, that's amazing. ನಾನು ನೋಡಿರುವಂಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನು ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಂತೆ. ಆ ಕನಸು ಕಾಣೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಕನಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗುರಿನ ತಲುಪಬೇಕು, ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆನೂ ಕೂಡ ಬರಬಾರ್ದಂತೆ. ಆ ಕನಸು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಆಶೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಆಶೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ ನಾವು ಪಠ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಪುಸ್ತಕದ ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಆಟಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಗೀತ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin, wa khaliquna wa raziquna wa huwa ala kulli shay'in qadir. نشيد العشرة المبشرين بالجنة من أصحاب رسول الله رجال عشرة خير الناس بعد الرسل كرام بررة صدقوا الأحد مع الرحمن فجزاحا فرحا ومشرح بشرهم بالجنة سبقت يا للبشرى يا للبشرى. أبو بكر رفيق الحجرة أفضل من آمن صديق الأمة. عمر الفاروق قوي الحق حكم فعدل وعز الله به الإسلام. عثمان ذو النورين جامع القرآن وعنوان الحياء والكرم. علي ابن الأم
والفارس الشجاع المقدام طلحة والزبير طلحة الخير وحواري الرسول صدق وثبات سعد سعيد خال الرسول مجاب الدعوة سعيد بن زيد ذو الفطرة أبو بدا أمين الأمة زاهد الدنيا وفاتح بلاد الشام أولئك صحب رسول الله جزاهم الرحمن خيرا ومشرا. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you had given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step. And that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh, Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing me home. Alhamdulillah, Alhamdulillah. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، محترم خواتین، الحمدللہ آج یہ باوقار موقع تھرڈ اینول فنکشن
ایم جی اسکول کا جہاں مجھے بلایا گیا. میں بہت زیادہ خوش ہوا یہاں پر آ کر کے. مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ ایسے تعلقوں میں اس طرح کا پروگرام اور اس طرح کے ادارے اور اس طرح کی جو ہے محنتیں ہو رہی ہیں. الحمدللہ یہ بہت ہی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ اس طرح کے ادارے، اس طرح کے انسٹیٹیوشن اور ایسی تعلیم، ایسی محنتیں کی جا رہی ہے جہاں پر دنیا بھی بنائی جا رہی ہے اور دین بھی بنایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ جو بچوں نے ابھی پرفارم کیا، ان کا کانفیڈنس دیکھا اور ان کے اسٹیج پہ جو پرفارمنس دیکھے، ماشاءاللہ دل باغ باغ ہو گیا. ایک بچی نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو سیرت کو بیان کیا، آپ کی خوبصورتی، آپ کے حسن کے بارے میں جو اس نے بیان کیا عربی میں، ماشاءاللہ آنکھوں سے آنسو آ گئے اور دل اتنا خوش ہوا کہ ایسا لگا کہ پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا الفاظ استعمال کروں. پھر بچوں نے اور بھی سارے ان کے پرفارم کیا انہوں نے. تو الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایسے ادارے ہمارے ملک میں، ہمارے کرناٹک میں چلائے جا رہے ہیں اور محنتیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور عصری تعلیم بھی دی جا رہی ہے. یہ قابل تعریف ہے. اور اس ادارے کے اندر ایک بات اور میں نے نوٹ کی کہ یہاں پر جو ہے کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. یہاں کے جو سٹاف ممبرز ہیں، جو کام کرنے والے ہیں اس کے اندر، مسلمان بھائی بھی ہیں، ہندو بھائی بھی ہیں، سب مل جھل کر کے جو ہے اس محنت کو کر رہے ہیں، اس ادارے کو چلا رہے ہیں، اس انسٹیٹیوشن کو چلا رہے ہیں. تو یہ ایک بہترین مثال ہے ایکتا کی، بھائی چارے کی، انسانیت کی. یہ ایک بہترین مثال ہے. ایسے ہی ہونا چاہیے، ایسے ہی ادارے چلنے چاہیے تاکہ ہمیں جو ہے دین کا علم بھی حاصل ہو اور دنیا کا علم بھی حاصل ہو، کیونکہ علم سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اللہ پاک نے جب ہمارے نبی آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا اور پہلی مرتبہ جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس میں آئے تو آ کر کے جبرائیل علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ تھا پڑھو، اقرا، پڑھو. اور کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو آپ نے کہا مانا بیکارین، میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. تو کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ہینچا اور کہا اقرا، پڑھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا مانا بیکارین، میں تو پڑھا لکھا نہیں. اس طرح سے 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہینچ کر اپنے سینے سے لگایا اور یہی کہا اقرا. پھر آخر میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. تو فرمایا کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پڑھنا یہ اللہ کا کتنا بڑا حکم ہے کہ وہی کا سلسلہ اس بات سے شروع ہوا، پڑھو. تو آج ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو علم کا حاصل کرنا اٹس ویری امپورٹنٹ. اور یہ بچے، ہماری نسلیں علم اس وقت حاصل کر سکتی ہے جب ہم والدین اس کے تعلق سے متفرق رہیں، فکر مند رہیں، اور فکر مند ہو کر کو ان کو اچھے سے اچھی تعلیم دیں، انہیں تعلیم یافتہ بنائیں، ان کو دنیا کا بھی علم دیں اور دین کا بھی علم دیں. یہ دونوں علم ضروری ہے. اگر ہم نے ان کو دنیا کا علم دیا، یہ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، IAS آفیسر، IPS آفیسر، سائنٹسٹ بنیں گے، بہت ساری فیلڈ ہے، اچھے اچھے مقامات پہ پہنچیں گے. لیکن اگر ہم نے ان کو دین کا علم نہیں دیا نا تو پھر یہ انسان نہیں بنیں گے، کیونکہ انسان کو انسان بنانے والی چیز وہ دین ہے. بس دین انسانیت سکھاتا ہے،
भाईचारगी सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है। दीन ही है जो ज़िंदगी के अंदर अमन लाता है, चैन लाता है, सुकून लाता है। ये दीन सिखाना होगा वालिदैन को, बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ में आप जो चाहें उन्हें बनाएं, लेकिन दीन के साथ बनाएं। ये मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है। और इल्म से ही बच्चे जो है वो उनका कैरेक्टर बनेगा, उनका किरदार बनेगा, वो बाअखलाक बनेंगे। एजुकेट जब तक नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं आएगा, जाहिलियत दूर नहीं होगी। और जाहिलियत जब तक इंसान के अंदर रहेगी, इंसान इंसान नहीं जानवर रहेगा। जैसे कि मैं था पहले ज़माने जाहिलियत में, इल्म ज़िंदगी में आने से पहले, दीन ज़िंदगी में आने से पहले एक जानवरों वाली ज़िंदगी थी, गुनाहों से भरी, सरासर गुनाहों से भरी हुई ज़िंदगी थी, नाफरमानी वाली ज़िंदगी थी। अल्लाह उसके रसूल को नहीं जानते थे। लेकिन जब इल्म आया, इल्म के ज़रिए से दीन ज़िंदगी में आया, तो ज़िंदगी का रुख इस तरह बदला कि आज आपके सामने इस हाल में खड़े हुए हैं। अल्लाह ने काफ़ी मशहूर कर दिया है, आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में सोशल मीडिया की वजह से मशहूर हो चुके हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि मशहूर होना असल नहीं है, मकबूल होना असल है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि दुआ करें कि अल्लाह हम मकबूल भी कर लें और अल्लाह कबूल फरमाए। और फिर एक बार मैं एमजी स्कूल के फाउंडर, यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के स्टाफ और तमाम हाजरीन मजलिस, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, आप लोगों ने मुझे मधु किया, बुलाया, यहाँ पर इज़्ज़त अफजाई की, इतनी मोहब्बत दी। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मेरी ये दुआएं हैं कि अल्लाह इस एमजी स्कूल को सारे आलम के एतबार से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, इसके बहुत सारे ब्रांचेस बने हमारे कर्नाटका शहर में, बल्कि हिंदुस्तान में। मेरी दुआएं अल्लाह खूब कामयाबी दे, तरक्की दे। अल्लाह इन छोटे छोटे बच्चों की कुर्बानियों को, इनकी मेहनतों को, इनके एफर्ट्स को कबूल फरमाए, इन बच्चों को नेक साले बनाए, दीन के दाई। So they have worked day and night to make a small present from the heart. Please accept it, sir. माशाल्लाह इन बच्चों ने इतने सारे गिफ्ट दिए, पूरी लाइफ में इतने गिफ्ट कभी नहीं मिले होंगे, और स्कूल लाइफ में तो कभी नहीं मिले थे, क्योंकि वो तो मेरी डफर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए इन बच्चों को, माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत दी। जज़ाकल्लाह खैरन। Everything that we wish for is not always guaranteed, but the efforts won't fruitless. Don't ever think you're useless. We all serve a purpose, so please don't feel hopeless. Don't give up, don't give in. There is always an answer for everything. Thank you. Thank you, Tahira. Next, I would like to call Samha from grade 4 to deliver her speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Repel negativity with positivity and watch life brings every single possibility, and have an attitude for a gratitude. And if you want to be happy, that's exactly what we are meant to do. Don't give up, don't give in. Always believe in yourself and in your dreams. Thank you. Thank you, Samha. Next, I would like to call Madiha from grade 5th to deliver her speech. You are awake, so let's make a loud alarm clock.
war from sleep. Because love is our weapon and we are armed to our teeth, we will change word with a word. How we speak, just wake up and so much noise that no one can sleep. Thank you. Thank you, Madiha. Next, I would like to call Ashraf from grade 5th to deliver his speech. Assalamu alaikum. To our leaders, we say that we do not want faith. The world belongs to everyone. Let's pressure peace. Let us join our hand together to create world where love, shade over hate and peace is the guiding principle. Let us create brightful future for all. Every child can smile, can heart, can heal. My name is Abdul Majid. I am studying grade 5th. I was not able to read in my strength, but MG school teachers helped me. Along always support me. They taught me again and again. You tell truth me again and again. Learning. I say thank you MG Public School. Thank you. Next, I would like to call Naushad from grade 5th. Assalamualaikum. Good evening. Ladies and gentlemen, my name is Naushad from grade 5th. I felt many difficulties in my study. Sometimes I felt sad and thought I could not improve. But MG Public School helped me a lot with love and kindness. Because of their support, I am improving day by day. Thank you MG Public School for believing me and helping me move to our world, a brighter future, and thank you. Thank you, Naushad. Next, I would like to call Mahira from grade 5th to deliver her speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I start with the name of Almighty Allah. Subhanallah ta'ala. Good evening to everyone present here today. I feel very happy to speak a few words about our respected principal sir, Mr. Mursal Qureshi. He is a highly educated person and hold a PhD in English. He also he came all the way from Kashmir and he is working here in Kolhar. Far from his native place, just to guide, educate us. Our principal sir is a very hardworking and dedicated leader. He also works from development of our school and for the bright future of students. His dream is make one of the best and unique schools in whole Kolhar. We are truly lucky how Get over the stage. Our 5th grade students have something special for you. Happy returns of this day, sir. Wish you happy, many more happy returns day. Blessing and harmony and brotherhood. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm today extremely happy. This is one of the memorable days in my life where I am being evident to such wonderful performances of our students, of my kids. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them with health, with ease. May Allah bless them here and hereafter. May Allah bless them, may Allah guide them. They are such wonderful kids of our MG school. क्लास में बहुत डर रहे थे लेकिन आज स्टेज पे ये कोई नहीं यहाँ पे डरा. Everyone is happy, everyone is very strong. May Allah bless you. May Allah bless you here and hereafter, especially their teachers, their management. Allah bless you all. Thank you so much for coming here. Allah bless you. I don't have words. I am extremely short of words to thank you all. آپ لوگوں نے میرا دل خوش کر دیا. اللہ آپ کو اور آپ کے والدین کو خوش کرے یہاں بھی اور وہاں بھی. السلام علیکم. ثناء اللہ انعامدار سر to please come on the stage. اسکول کو لے کر آپ کی مینجمنٹ کا خواب آج پورا ہو گیا. آپ دیکھیے آپ کا ڈے کیسا ہوا آج اینول ڈے کا. I request all the people to please clap for the management at your SSC.
Mr. Moinuddin Girgawi, sir, please come on the stage. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम मौला है। जैसा कि आपने हमारे बच्चों का प्रोग्राम देखा है कि मुझे नहीं लगता था कि बच्चे जो है स्टेज पे इस तरीके से जो है परफॉर्मेंस देंगे। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, इसमें बच्चों का कमाल है और टीचर्स का कमाल है। ये हमारे जो बच्चे हैं मुस्तकबिल के लीडर हैं और इसमें डॉक्टर्स हैं और इंसानियत की खिदमत करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो ये बच्चे जो है उसमें जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एमजी स्कूल जो है आपसे जो वादे किए हैं उसमें से एक वादा हिफ्ज़ क्लास का था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें चंद बच्चे जो हिफ्ज़ शुरू किए हैं। ये जो स्कूल जिसके नाम से रखी गई है महबूब सब गिरगावी, इंशाअल्लाह उनकी कब्र में इसका सवाब पहुँचेगा। तकरीबन 15 बच्चे जो है हमारे हिफ्ज़ कर रहे हैं इंशाअल्लाह, हिफ्ज़ की क्लास में। और नीट की क्लास हमारी 1 साल से माशाअल्लाह चल रही है। और भी हमारे जो वादे हैं यूपीएससी की इंशाअल्लाह वो भी हम ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। और हमारे जो गैट मैनेजमेंट है 8 जो भाई हैं ये अपना जान माल अपना वक्त स्कूल के लिए लगा रहे हैं। और आगे जो है आपको एक खुशखबरी की बात सुनाता हूँ कि इंशाअल्लाह अभी चंद दिनों के बाद में हमारे स्कूल की बिल्डिंग की तामीर शुरू होगी इंशाअल्लाह। यह है आपके सामने स्क्रीन पर हमारे स्कूल की बिल्डिंग। इस तरीके से लगा रहे हैं। कहीं भी ऐसी मैनेजमेंट ने जो खुद का माल लगाए तो अल्हम्दुलिल्लाह फंड लेकर लोग जो है स्कूल बना रहे हैं। हमारी गैट मैनेजमेंट जो है अपना माल जो कमाया हुआ है खून और पसीने का वो आपके बच्चों के तरीके के लिए ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling, I need your help. My heart is breaking, so tired of crying. Lord, I'm calling, I need your help. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, oh na na na. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, yeah. Astaghfirullah. Forgive me, Allah. मैं पनाह मांगता हूँ कि अल्लाह को हर एक बुराई से I promise that I will be sincere, honest, passionate and God-fearing. मैं वादा करता हूँ कि मैं ईमानदारी से, दयानतदारी से, जुनून और जज्बे के साथ अल्लाह से डरते हुए काम करूँगा। I give my best. मैं अपना बेहतर दूँगा। I place my कोलार, पूरे कोलार को फख्र महसूस कराऊँगा। I make my India proud. मैं पूरे हिंदुस्तान को फख्र महसूस कराऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। Thank you. With gratitude and faith we pray in MG School, blessed day. Together we learn, together we grow. In our school, our spirits flow with faith and hope.
voice raise. In MG School we sing God's praise.